Hello students, welcome to our online lecture. This is our sixth lecture of Ionic Equilibria. In last lecture, we have seen the salts of weak acid and weak bases in three different cases. In first case, Ka of acid is greater than the Kb of base. That means K is the dissociation constant of weak acid and Kb is the dissociation constant of weak base. So in first case, we have discussed about the Ka is greater than the Kb. So in that case, if K is greater than Kb, then the solution of salt is slightly acidic in nature. And in second case, if Ka is less than Kb, then in that case, we have taken the ammonium cyanide as a salt of weak acid and weak base. So the solution of ammonium cyanide is slightly basic in nature. Okay. And in third case, that means salt of weak acid and weak base for which Ka is equal to Kb if both dissociation constant for acid and base both are same, then in that case the solution is neutral. The salt solution is neutral in nature. Okay, so litmus paper पे तो कोई change नहीं आएगा. And again we had discussed about the common ion effect in last lecture. Common ion effect, as I told you earlier, this common ion effect is very important for different concepts. So common ion effect because of common ion because of two solutes dissolve in a solvent, dissolve in a water that contain one of the ion, either cation or either cation or anion may be common. Because of this common ion, the ionization of weak electrolyte is suppressed in presence of strong electrolyte. Because of what? Because of common ion. Okay, so this is the effect of common ion and which we have discussed in last lecture. Now today we are going to discuss about the buffer solution. What are the buffer solution? Buffer solution is solution which resists a change in its pH when small amount of acid or base is added in a solution. What is its meaning? बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन के पीएच पे कोई चेंजेस नहीं आने देता है बिकॉज ऑफ इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, उसके पीएच पे सॉल्यूशन के पीएच पे कोई चेंजेस नहीं आता है बिकॉज ऑफ बफर सॉल्यूशन. This is called as the buffer solution. So what is this buffer solution? Buffer solution is a solution which resists a change in its pH when small amount of acid or base is added into it. As we know, buffer solution, ठीक है? As we know, let's see one of the example of buffer. Blood means हम लोग देखो ह्यूमन बीइंग कितना खाते, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के फूड्स खाते, बाहर जाते तो बहुत से फूड खाते, घर में भी बहुत खाते, कभी ब्रेड खा लेते तो कभी चाय पी लेते तो कभी मतलब डिफरेंट टाइप्स के फूड खा लेते. तो कुछ फूड्स एसिडिक नेचर के होंगे, कुछ फूड बेसिक नेचर के होंगे और कुछ फूड न्यूट्रल नेचर के होंगे. ठीक है, तो ऐसा कभी देखा है क्या कि ब्लड की भी पीएच रहती है? सबको पता है. ठीक है, तो ऐसा कभी देखा है कि एसिडिक फूड खाया है या लेमन जूस पिया है या कोई मतलब लेमन कंटेनिंग कंपोनेंट खाया है, तो लेमन इज एसिडिक इन नेचर, तो जैसे खाते तो ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाती है, बराबर. और अगर सॉल्ट खाते तो बेस की ब्लड की पीएच न्यूट्रल हो जाती है और बेसिक कंपोनेंट खाते तो ब्लड की पीएच इंक्रीज हो जाती है. ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है. बिकॉज our body, our blood, it itself act as a buffer solution. बराबर कि कुछ भी फूड खाओगे तो ब्लड जो है ना, जो बफर सॉल्यूशन एक्ट होता है वो
उस अपने ब्लड की पीएच मेंटेन रहती है। कुछ भी खाओ, एसिडिक फूड खाओ, बेसिक फूड खाओ, कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। अगर थोड़ा भी चेंज आ जाए अपने पीएच पे, ब्लड के पीएच पे, तो it may be cause death. Okay, so buffer solution is the very important term in human being, in human body, or in um, not human body, not only human body, in living being. जो भी ब्लड सैंपल है, जो भी ब्लड है, which itself act as a buffer solution. Okay, what is the need of buffer solution? क्यों नीड है? अब हम लोग बहुत से सैंपल्स घर में फूड मटेरियल लाते हैं, तो दैट कंटेन सम एसिडिक फूड, बराबर, जैसे जाम है, जेलीज है, और अगर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में वो आ जाए तो एनवायरनमेंट में एसिडिक नेचर भी रहता है, तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में अगर आता है तो उसकी पीएच तो चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट की पीएच रहती है, ये तो सबको पता होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट की पीएच रहती है तो वो तो खराब हो जाना चाहिए। पर ऐसा कभी होता है? आप लोगों ने केयरफुली देखना चाहिए कि वो जो प्रिजर्वेटिव सॉरी जो बॉटल्स है जाम की या जेलीज की जो बॉटल्स है, या कोई भी प्रोडक्ट की, फूड प्रोडक्ट की जो बॉटल्स आती है, या तो इवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सिरप्स हुए, तो उस पर देखना चाहिए कि क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या डाला हुआ है उसके अंदर। तो उस पर कुछ ना कुछ तो भी लिखा रहेगा, एज अ प्रिजर्वेटिव बोलो, एज अ बफर करके, ऐसा कुछ तो भी मेंशन रहेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द नीड ऑफ बफर सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट पीएच, मतलब जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स लाते हैं उसकी वो कंपोनेंट की पीएच डेफिनेट रहती है, तो विच इज टू बी द सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेट पीएच बी प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड। ठीक है, द प्रिजर्वेशन ऑफ सच सॉल्यूशन इज इवन मोर डिफिकल्ट दैन इट्स प्रिपरेशन। उसको प्रिपेयर करना बहुत ईजी है, बट उसको स्टोर करके उसको कंटिन्यूअसली मतलब लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर करो और प्रिजर्व करो, उसको safely रखो, that is very difficult task. Okay, if the solution comes in contact with air, it will absorb CO2 and become acidic in nature, right? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर में CO2 वगैरह है तो वो एसिडिक इन नेचर में भी कन्वर्ट हो जाए। और अगर उसको आप ग्लास बॉटल में स्टोर करते हो तो ग्लास बॉटल से क्या हो सकता है, तो अल्कलाइन इम्प्योरिटीज जो रहती है ग्लास सी, वो उसके पीएच को अल्टर कर दे और मे बी बेसिक हो जाए। सो ऐसा कुछ ना हो पाए, मतलब टू अवॉइड दैट, एयर के कांटेक्ट में आता है तो एसिडिक बन सकता है, बॉटल के कांटेक्ट में आता है तो बेसिक बन हो सकता है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है, टू अवॉइड दिस पॉसिबिलिटीज, ऑल दिस पॉसिबिलिटीज, buffer solution is used. Okay, so due to this reason pharmaceutical solutions are buffered as the buffer solution, which are capable for maintaining the pH at some fairly constant value when a small amount of acid or bases are added. Means small amount of acid or small amount of base भी डालते हो, if there is a buffer or if there is a preservative, then कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे उनके पीएच पे, कोई भी वहाँ पे मतलब जो कंटेंट्स है उसके एसिडिक या बेसिक में नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे। Okay, so this is the necessity of buffer solution. So how will you define the buffer solution? A solution which resists a changes in pH. किसके पीएच में? सॉल्यूशन के पीएच में। when a small amount of strong acid or strong base is added to it is called as buffer solution. Now there are two types of buffer solution. कितने टाइप्स के बफर सॉल्यूशन है? टू टाइप्स के बफर सॉल्यूशन है। वन इज एसिडिक बफर एंड सेकंड वन इज बेसिक बफर। Okay, one is acidic buffer and second one is basic buffer. Now the first type is acidic buffer. What is the meaning of acidic buffer? Generally, the buffer solution is prepared by the combination of, listen carefully, yeah, buffer solution is prepared by the combination of weak acid and its salt with strong base.
लिसन केयरफुली, कोई भी कंपोनेंट बफर एक्ट नहीं होता है, अगर उसका कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो देन इट एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। सो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, एसिडिक बफर के बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वहां पे एसिडिक कंपोनेंट होंगे। सो एसिडिक बफर क्या होता है, ए solution which contain weak acid and its salt with strong base is called an acidic buffer। क्या होना चाहिए एसिडिक बफर के लिए, a weak acid, कोई भी weak acid, then common example is, our best example is acetic acid, right? Our best example is acetic acid, that means CH3COOH, ठीक है, weak acid plus its salt with strong base। अब acetic acid का salt with strong base, that means acetic acid, if it is react with strong base NaOH, then we get sodium acetate। So salt of acetic acid with strong base is sodium acetate, okay? So this is the salt of acetic acid with strong base, CH3CONA, and this is acetic acid. So combination of this acetic acid and sodium acetate is called as acidic buffer, okay? This is the common example of acidic buffer, acetic acid with its salt of strong base, that means sodium acetate. Another example is HCN, hydrogen cyanide or hydrocyanic acid with its salt, उसका salt with strong base KCN, HCN, that means hydrogen cyanide with its salt, strong base के साथ KOH के साथ अगर इसकी reaction करते हो then we get KCN, right? So the another example of acidic buffer is hydrogen cyanide with its salt KCN, that means potassium cyanide, correct? Benzoic acid means C6H5COOH, correct? C6H5COOH। अब ये हो गया अपना वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो किसके साथ, सोडियम के साथ। सो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका बेस सॉल्ट इज COONA, that means sodium benzoate, correct? So benzoic acid and the sodium benzoate is also acidic buffer. So there are number of types of acidic buffer having a different pH, सबकी pH different है, okay? So these are the some examples of acidic buffer. Main concept is that a solution containing weak acid and its salt with strong base, इतना ही ध्यान में रखना है कि एसिडिक बफर कौन से सॉल्यूशन, कौन से कंपोनेंट एक्ट होते हैं कि उसका वीक एसिड और उसी वीक एसिड का salt with strong base ऐसा अगर दिखता है तो that is called as the acidic buffer। ऐसे MCQs क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को कि identify the acidic buffer। so आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, firstly we have to check whether it is weak acid and other component is whether it is a salt of that particular weak acid with strong base or not, okay? For example, see here, weak acids such as acetic acid and its salt sodium acetate is an acidic buffer solution, okay? This is the one of the example, ऐसे मैंने दो चार example दिए हैं अभी, hydrogen cyanide, sodium benzoate, like that, okay? So acetic acid with sodium acetate is the example of acidic buffer, acidic buffer, okay? Now the pH of that acidic buffer is given by the equation। अब ये जो pH है एसिडिक बफर की, इसको कैसे कौन से इक्वेशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। सो द इक्वेशन इज pH is equal to pKa plus log to the base 10 concentration of salt upon concentration of acid, okay? What is the equation for the acidic buffer? pH is equal to pKa plus log of concentration of salt upon the concentration of acid. Now this pH is nothing but A,
pH, we know that pH क्या रहता है, pH is equal to hydrogen potential, pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H plus ion, correct? Concentration of H plus ion, this is called as the pH. already हम लोगों ने डिस्कस किया. So what is the meaning of pKa? pKa क्या होगा, negative logarithm to the base 10 Ka, like that. इसके जैसा ही ये रहेगा, pKa is equal to negative logarithm to the base 10 Ka. Okay, so this Ka is the dissociation constant of acid, correct? This Ka is nothing but a dissociation constant of acid. This is the acidic buffer. Equation for the acidic buffer is pH is equal to pKa plus log of concentration of salt upon the concentration of acid. Second type is basic buffer. Basic buffer solution. As we discussed earlier, acidic buffer means क्या होता है कि acid, weak acid and its salt with strong base. It's vice versa. Basic buffer क्या होगा? A solution containing weak base. Okay, a solution containing weak base with its salt with its strong acid. Weak base and its salt with strong acid. मतलब जो बेस रहेगा वो कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, और उसी वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका सॉल्ट होना चाहिए. जो दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक बफर. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड इज कॉल्ड एज द बेसिक बफर. ओके, नाउ एग्जांपल इज NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्या है एग्जांपल? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया वीक बेस. अब इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर मैं यहाँ पे HCl यूज करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करती हूँ तो ये OH को खा लेगा हाइड्रोजन, तो वाटर रिमूव हो जाएगा और ये Cl यहाँ पे आ जाएगा. तो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, क्या, NH4Cl. So what is this? This is ammonium chloride is a salt. Combination of weak base and strong acid. So ये NH4Cl और NH4OH को अगर हम लोग मिला लेते हैं तो we get one of the buffer solution, correct? So example of basic buffer क्या होगा? Example, combination of ammonium hydroxide with the salt, with its salt NH4Cl is a basic buffer. ओके, NH4Cl कैसे तैयार हुआ है? NH4OH की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करते हो तो वी गेट NH4Cl, और ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है किसके? NH4OH के. ओके, सो वीक बेस सच एज NH4OH with its salt NH4Cl is a basic buffer solution. Now the equation for basic buffer. The pOH of basic buffer is given by, कैसे लिखोगे pOH of basic buffer? pOH is equal to pKb plus log of concentration of salt upon the concentration of base. ऐसा इक्वेशन हम लोगों ने pH का भी लिखा था. pOH is equal to pKb plus log concentration of salt upon the concentration of base. What is this pKb? pKb is nothing but a minus log of log to the base 10 Kb. pKb को कैसे लिखना है? pKb को minus log to the base 10 Kb, and Kb is nothing but a dissociation constant for base. Okay, Kb is nothing but a dissociation constant for base. Okay, now these two equations, pH and pOH, equation for the pH and equation for the pOH, which equation? pH is equal to pKa plus log of to the base 10 concentration of salt upon the concentration of acid, and another equation pOH is equal to pKb plus log of to the base 10 of concentration of salt upon the concentration of base. These two equations are nothing but a Henderson-Hasselbalch equation. These two equations are called as or known as Henderson-Hasselbalch equation.
एक हेंडरसन साइंटिस्ट और दूसरे हेसलबस, ये दो साइंटिस्ट ने मिला के इक्वेशन को डिराइव किया है। अब इसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन हम लोग देखेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, दिस टू इक्वेशन आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, so these two equations are known as Henderson-Hasselbalch equation. This equation is very very important to calculate the pH in industrial point of view, also in industrial level. Okay, so now ये तो हो गया एसिडिक और बेसिक बफर्स की। एसिडिक बफर क्या होता है? वीक एसिड विथ इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। Okay, now what is the action of this buffer? What is the working of this buffer whenever it is put into a solution? Okay, अब इसकी हम लोग working देखेंगे। So before that we have to discuss preparation of buffer solution. ये already हम लोगों ने देखा है क्या रहता है acidic buffer. Buffer containing weak acid and its highly ionizable salt. Okay, and basic buffer क्या रहता है? Buffer containing weak base and its highly ionizable salt. On the basis of different pH, ये एग्जाम्पल्स रहते हैं। अभी यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट। तो एसिडिक बफर क्या रहता है, मतलब सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन क्या रहता है? पीएच इज बिलो 7 और बेसिक की पीएच इज अबव 7। तो बिलो 7 है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट, और पीएच अगर अबव 7 है तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक बफर, दैट मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद NH4Cl. Now what is the working of buffer solution? What is the action of buffer solution in solution? Okay, now what is the action of buffer action? The resistance of buffer solution to change in pH is known as buffer action. That means resist करना, pH को change होने से रोकना, that is the action of buffer ना। सॉल्यूशन में अगर बफर सॉल्यूशन आप डालते हो तो वो बिकॉज ऑफ दैट बफर सॉल्यूशन अगर एसिडिक या बेसिडिक कोई भी कंपोनेंट अगर ऐड हो रहे तो उसको पीएच को चेंज करने से रोको, दैट इज कॉल्ड एज द एक्शन ऑफ बफर। मीन्स अगर मैंने H+ आयन डाल दिए, दैट मीन्स एसिड अगर डाल देती हूँ तो क्या होनी चाहिए? पीएच लेस देन डिक्रीजेस, पीएच इज डिक्रीजेस, pH is decreases, and if the base is added, if any base is added, then pH is increases, right? बट अगर वहां पे बफर सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने से उसको रेजिस्ट करेगा, करेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड एज द this is the action of buffer solution. So the resistance of buffer solution to a change in pH is known as buffer action. Consider a system. Which system? अब हम लोग action of acidic buffer discuss करेंगे. Okay. So now consider a buffer system of sodium acetate with acetic acid. अभी हम लोगों ने देखा है. This is the example of acidic buffer. Sodium acetate with acetic acid. Sodium acetate with acetic acid. Okay, so this is the acidic buffer. Now this sodium acetate is a strong electrolyte, correct? This sodium acetate is a strong electrolyte. तो क्या करेगा? Which dissociates completely in water. वो डिसोसिएट क्या हो जाता है? कंप्लीटली डिसोसिएट होता है बिकॉज ऑफ इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली. नाउ सी हियर, this is the reaction. Whenever it is added in a water aqueous media, it dissociates completely in the form of CH3CO negative and any positive ion. Another component is weak acid, that means acetic acid. Acetic acid क्या रहेगा? It is weak acid, and because of this weak acid it dissociates partially, it dissociates very slightly. तो इसको हम लोग equilibrium reaction में लिखते हैं. So what is the dissociation reaction of this weak acid? It is acetic acid is converted into acetate anion and H+ ion. Okay, ये हो गया अभी अपनी reaction of acidic buffer in aqueous media. Now if acid is added, ठीक है, if in first case if strong acid is added in this solution. अब ये जो अभी हम लोगों ने reaction लिखी ना, ये दो जो reaction लिखी थी,
ये जो सोल्यूशन है एसिडिक बफर का, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड के बफर का सोल्यूशन है। अब अगर हम लोग वहां पे कोई एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड इन दिस सोल्यूशन, देन व्हाट इज द एक्शन ऑफ बफर? नाउ जैसे मैंने यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया, एंड एज वी नो एसिडिक सॉल्यूशन मतलब क्या, H प्लस आयन ना, एसिड में ऐड कर रही हूँ मतलब क्या, H प्लस आयन इज एडेड। सो एसिड से कौन सा आयन रहता है, H प्लस आयन। वो H प्लस आयन कहाँ पे जाके रिएक्ट होगा, वो कहाँ पे जाके रिएक्ट होगा, कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा? अब ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो ये किसके साथ रिएक्ट होगी, जनरली नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के साथ। ऑब्वियसली किस स्पीसीज के साथ रिएक्ट होगी, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के साथ। सो इन आवर रिएक्शन मिक्सचर which species is anionic species, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कौन सी है, this acetate anion. Okay, this acetate anion is the negatively charged species. So अगर यहाँ पे incoming positively charged H plus ion आ रहा है, मतलब क्या, from एक्सटर्नली एडेड एसिड से कौन रिएक्ट होगा, H प्लस आयन। किसके साथ रिएक्ट होगा, नेगेटिवली चार्ज एनायोनिक स्पीसीज के साथ, दैट मींस एसिटेट एनायन के साथ। ये लार्ज परसेंटेज में है ना यहाँ पे, क्योंकि ये सोडियम एसिटेट इज डिसोसिएट्स कंप्लीटली। ओके, सो ये किसके साथ रिएक्ट होगा, H प्लस आयन, एसिटेट एनायन फ्रॉम द salt is reacts. Okay, so this this acetate anion reacts with the H plus ion. ये H plus ion कहाँ से आया, this is the externally added acid है। फर्स्ट केस में यही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि if the strong acid is added मतलब क्या, the H plus ion of the acid reacts with the basic component, that means acetate ion of the salt in the buffer। तो एसिटेट आयन के साथ H plus ion रिएक्ट करता है तो अपने को मिलेगा एसिटिक एसिड, करेक्ट। तो एसिटिक एसिड अपने को मिल रहा है। सो पीएच पे कोई चेंजेस आ रहा है क्या, कुछ भी पीएच पे चेंजेस नहीं आ रहे। जो H प्लस आयन हम लोग ऐड कर रहे मतलब एसिड ऐड कर रहे, वो तो न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है, वो तो रिएक्ट हो रहा है बेस के साथ, मतलब एसिडिक आयन के साथ। तो वहां पे पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, तो वो रिएक्ट हो जाएगा, तो वहां पे पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिमेन एज इट इज इन फर्स्ट केस। In second case, if small amount of base is added, listen carefully, if small amount of base is added, base मतलब क्या, OH माइनस आयन अगर आप लोग ऐड करते हो, then this base मतलब OH माइनस आयन सोल्यूशन के कौन से आयन के साथ रिएक्ट होगा, ये जो OH माइनस आयन एक्सटर्नली एडेड किया हुआ है, ये कौन से आयन्स के साथ रिएक्ट होगा, सोल्यूशन के। अब सोल्यूशन में जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी उसी के साथ वो रिएक्ट होगा। तो सॉल्यूशन में ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके साथ H माइनस आयन इजीली रिएक्ट हो सकता है, द H प्लस आयन। दिस H प्लस आयन कौन से, सेकेंड रिएक्शन का जो H प्लस आयन है ना, डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड होने के बाद जो H प्लस आयन मिल रहा है, इस आयन के साथ अपना एक्सटर्नली एडेड बेस दैट मीन्स OH माइनस आयन रिएक्ट हो सकता है, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, this OH minus ion reacts with the H plus ion from the acetic acid। अब ये एसिटिक एसिड के H प्लस आयन के साथ अगर वो रिएक्ट होता है, ये H प्लस आयन के साथ ये OH, तो फॉर्मेशन ऑफ H2O, ये क्या करेंगे, वो फॉर्म कर देंगे H2O को, एंड वी गेट दिस एसिटेट एनायन। ओके, अब यहाँ पे एसिटेट एनायन तैयार हो रहे हैं, एसिटेट एनायन तैयार हो रहे मतलब कि H प्लस आयन खत्म हो रहे, H प्लस आयन खत्म हो रहे, दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है, सी इन दिस रिएक्शन कंसिडर करो कि ये H प्लस के साथ वो रिएक्ट हो गया, वो OH माइनस, और ये H प्लस आयन खत्म हो गए रिएक्शन में से, प्रोडक्ट में से H प्लस आयन खत्म हो गए, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, डिक्रीज्ड हो गया ना। सो एज वी नो, अगर प्रोडक्ट डिक्रीज्ड होता है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस। So whenever this type of situation is occur, then according to Lee-Chatelier principle क्या होता है कि अगर कोई साइड में प्रोडक्ट साइड में स्ट्रेस रिलीज होता है या स्ट्रेस तैयार होता है बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीजेस, द प्रोडक्ट इज डिक्रीजेस, तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। अब रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड जाएगी, मतलब मोर एसिटिक एसिड acetic acid is undergo dissociation, more amount of acetic acid is undergo dissociation, then more will be the acetate anion and H plus ion is obtained।
क्योंकि फर्स्टली क्या हो रहा है, H प्लस आयन के साथ तो वो H माइनस आयन रिएक्ट हो रहा है, जो एक्सटर्नली एडेड बेस है उसके साथ ये H प्लस आयन चला जा रहा है। जैसे ही H प्लस आयन चले जा रहे, मतलब क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट तो हो गया कम ना, H प्लस आयन तो पूरे चले गए, बचा कौन, एसिटेट आयन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए पूरा चाहिए, एसिटेट आयन भी चाहिए और H प्लस आयन भी चाहिए। H प्लस आयन खत्म हो गए तो अब रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, मोर H प्लस आयन प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। सो this acetic acid is undergo more dissociation whenever the base is added. Okay, so more dissociation होता है तो यहाँ पे फिर से H प्लस आयन तैयार होंगे, और H प्लस आयन तैयार होते हैं, दैट मीन्स pH remains as it is, pH पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अंडरस्टूड? So see here, this OH minus ion reacts with the acetic acid, produce acetate anion with water. Thus, the added acid or base cannot change the H plus ion and OH minus ion concentration. वो कोई चेंजेस नहीं ला सकता है, कोई भी एसिड डालते हो या बेस डालते हो, वो अपने सॉल्यूशन के पीएच पे कोई चेंजेस नहीं ला सकता है. सो दैट्स व्हाई द pH of buffer solution remains unchanged. Okay. So this is the action of buffers, acidic buffer solution. Same action basic buffer की भी रहती है. क्या है acidic buffer action में, फर्स्टली एसिड डालो तो एसिड किसके साथ रिएक्ट होगा, एसिड का H प्लस आयन किसके साथ रिएक्ट होगा, एसिटेट आयन के साथ, तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। बेस अगर डालते हो तो OH माइनस आयन किसके साथ रिएक्ट होगा, H प्लस आयन फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो रिएक्ट होता है तो मोर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस तो एसिटिक एसिड मोर डिसोसिएट होगा, सो द pH रिमेन अनचेंज्ड. डायलूशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द पीएच बफर. अगर वाटर डालते हो तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है अपने पीएच पे, सॉल्यूशन के पीएच पे. ओके, कितना भी डाइल्यूट करो तो पीएच रिमेन सेम. एसिडिक बफर. नाउ दिस इज द शॉर्ट we can say this slide shows the short action of acidic buffer. क्या हो रहा है यहाँ पे, एसिटिक एसिड एसिटेट आयन के साथ कौन रिएक्ट होगा, जो एक्सटर्नली एडेड H प्लस आयन है, और ये H प्लस आयन के साथ कौन रिएक्ट होगा, जो एडेड हम लोग बेस ऐड कर रहे हैं वो वाटर में कन्वर्ट करेगा. ओके, सो और हाईली आयोनाइजेबल सॉल्ट कौन सा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है, दैट मीन सोडियम एसिटेट इज अ highly ionizable salt which undergo ionization completely. So this is the action of acidic buffer. Okay. Now, what are the application of buffer solution? क्या application है buffer solution के? Buffer solution have the extensive, very versatile applications in different fields. First one, in biochemical system. The pH of human blood is 7.35 to 7.45 due to buffer of carbonic acid, H2CO3, that means carbonate anion and carbonic acid. Okay. The saline solution, that means intravenous injection जो रहते हैं ना, तो उसमें बफर को मेंटेन किया जाता, मतलब which contain the buffer to maintain the proper pH of blood. Agriculture. In agriculture, what is the importance of buffer solution? The soil is get buffered due to presence of salts like carbonate, bicarbonate, phosphates and organic acid. Soil की भी pH रहती है ना, तो उसमें भी buffer solution की जरूरत है ही. So agriculture में भी soil get buffered due to presence of salts like carbonate, bicarbonate, phosphates and organic acids. In इंडस्ट्री के तो बहुत यूज, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में कि इंडस्ट्री में जितने भी कंपोनेंट्स तैयार हो रहे तो उसको स्टोर करके रखने के लिए तो कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव, कुछ ना कुछ बफर सॉल्यूशन तो ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने स्टोर किया जाता है. सो बफर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन पेपर, डाई, इंक, पेंट एंड ड्रग इंडस्ट्रीज. मेडिसिन में तो चाहिए बफर, क्योंकि मेडिसिन की भी एक्सपायरी डेट रहती है, तब तक मेडिसिन जो रहती है वो वेरी मतलब अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाए तो कुछ भी रिएक्शन हो सकती है, तो वहां पे भी बफर सॉल्यूशन की एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सोडियम साइट्रेट इज यूज्ड एज अ बफर इन द प्रिपरेशन ऑफ पेनिसिलिन, एज अ ड्रग इन एनालिटिकल केमिस्ट्री.
in analytical chemistry. In analytical chemistry, there is again analysis of pH takes place. pH means in qualitative analysis, pH is about 8 to 10, which is required for the preparation of cation of third A group, which is maintained with the use of ammonium hydroxide with ammonium chloride as a buffer. Okay, so these are the some applications of buffer solution in different fields. Now, our next topic is solubility. We are all familiar about the solubility because in chapter number 2, solution, you have already learned about the solubility. Okay, so solubility matlab kya hai? Simple, how much amount of or how much solute is dissolved in a solvent at a given temperature. Simply we can define how much solute dissolved in a solution at a given temperature, that is called as the solubility. Correct. Now the solubility having a different definitions. In this chapter, ये जो अपना आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग कौन से कंपोनेंट की स्टडी कर रहे हैं? जो वीक कंपोनेंट है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है. तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी हम लोग स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट की ही सोल्युबिलिटी स्टडी करेंगे, बिकॉज जो कंप्लीटली सोल्युबल सॉल्ट्स है वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करते, बराबर ना. सो यहाँ पे हम लोग जो सोल्युबिलिटी स्टडी करेंगे इन आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर, यहाँ पे हम लोग सॉल्ट यूज करेंगे स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स. अंडरस्टूड. नाउ solubility के different definitions है. कौन से definitions है? Solubility is defined as the amount of solute present in 100 gram of solution in a saturated state at a given temperature. 100 gram of solution in a saturated state, that is very important in solubility. Saturated condition is very important in solubility. Again, another definition is solubility is also defined as the grams of solute in 1 liter of solution. That means gram per liter. Solubility is also defined as the grams of solute in 1 liter of solution. That is also called as the solubility. And the last definition is in the form of moles of solute. Number of moles of solute in 1 liter of solution. In recently nowadays this definition is used. जो third definition अभी देखी ना हम लोगों ने, तो most of the times ये definition use की जाती है number of moles के form में. So what is the definition? Number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, that is called as the solubility, and having a unit moles per liter. Okay, so this is called as the solubility. Solubility equilibria. अब solubility equilibria क्या होता है? See, solubility is the ability of a substance to dissolve. Correct. मतलब कोई भी substance की जो tendency है dissolve होने की, that is called as the solubility. Now in the study of solubility equilibrium, we have generally deal with the low solubility compounds, those which dissolve poorly. जैसे कि मैंने आपको बताया कि in solubility equilibria we have to use sparingly soluble salt. Sparingly मतलब very small amount. खूब बहुत छोटे अमाउंट में जो डिसॉल्व होता है वैसा सॉल्ट हम लोग यूज करेंगे इन सोलुबिलिटी इक्विलिब्रिया, दैट इज कॉल्ड एज द पुअरली सोलुबल सॉल्ट और स्पैरिंगली सोलुबल सॉल्ट. नाउ कंसीडर AgCl, silver chloride, solid in the form of solid, the powder of AgCl, salt, उसको हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे? which is added in a water and stir it vigorously. ठीक है, उसको ऐड किया. A very small amount of AgCl is dissolved in a water because it is a sparingly soluble salt. तो जितना वो डिसॉल्व होगा उसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि this condition is the saturated condition of this solution. अब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि what is the meaning of saturated and what is the meaning of super saturated. जैसे कि जनरली सैचुरेटेड कंडीशन ही यहाँ पे आप लोगों को देखना है. तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी कि कंसिडर कि 1 ग्लास ऑफ वाटर है एंड आई हैव 2 स्पून ऑफ शुगर. ठीक है, अब वो जो 1 ग्लास ऑफ वाटर है उसमें मैंने ये 2 स्पून ऑफ शुगर डाल दी एंड स्टर किया. क्या होगा?
it completely dissolve, वो पूरी की पूरी dissolve हो जाएगी. Then again I have added third spoon of sugar. मैंने वो थर्ड स्पून डाल दिया सेम ग्लास में, वो भी डिजोल्व हो गया. चौथा स्पून भी डालती हूँ शुगर, वो भी डिजोल्व हो जाता है. एंड व्हेनेवर ए फिफ्थ स्पून ऑफ शुगर, जब वैसे मैं ऐड करती हूँ वाटर में, 1 glass of water में, सेम ग्लास ऑफ वाटर में, तो some amount of sugar get dissolved and some amount of sugar crystals remain in a solid form at the bottom of this glass. ओके मतलब जैसे मैंने फिफ्थ वाला स्पून ऐड किया शुगर का, उसमें से हाफ हो गया डिजोल्व एंड हाफ रिमेन इन द फॉर्म ऑफ अनडिजोल्व. और 6 जब आप डालोगे, 6 स्पून ऑफ शुगर डालोगे, तो वो तो वैसे का वैसे ही अनडिजोल्व रहेगा, पूरा का पूरा अनडिजोल्व रहेगा. तो दैट मीन्स द क्या हो गया वहां पे, सोलुबिलिटी डिक्रीज्ड हो गई. नॉट डिक्रीज्ड, मतलब जो कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट की डिसोल्यूशन की वो खत्म हो चुकी है. जो सॉल्ट जो शुगर रहेगी क्रिस्टल्स इन द फॉर्म ऑफ अनडिजोल्व फॉर्म अपने को मिल रहे. दिस इज द कंडीशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस सैचुरेटेड कंडीशन फॉर दिस शुगर सॉल्यूशन. सो हियर आल्सो सम, जैसे आप लोग AgCl डाल रहे हो, which is sparingly soluble salt है, some amount of AgCl get dissolved and some remain in undissolved form, तो उसको हम लोग बोलेंगे saturated solution. Okay, so most of the salts remain in undissolved form because it is sparingly soluble salt. तो बहुत सारा amount में जो salt रहेगा वो undissolved form में ही रहेगा. Now see the examples, see the reaction here. AgCl, ठीक है, we had taken VAgCl, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में था अपना ये. जैसे मैंने उसको वाटर में डाला, सम अमाउंट ऑफ AgCl इज डिसॉल्व. ठीक है, अब जो डिसॉल्व हुआ है उस पर ही ध्यान देना है अपने को. सम अमाउंट ऑफ AgCl डिसॉल्व, तो वो जो डिसॉल्व हुआ AgCl है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस. नाउ कंसिडर दिस डिसॉल्व AgCl एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब क्या है, जैसे वो वाटर में जाता है it dissociates in the form of Ag plus and Cl minus ion. First we have to take AgCl solid, डाल दिया आपने वाटर में, some amount of AgCl get dissolved. वो जो डिजोल्व हुआ से AgCl है उसको हम लोग बोलते हैं कि which is considered as a strong electrolyte, and in the form of water it is considered as a strong electrolyte, so it dissociates completely, that means Ag plus and Cl minus ion. राइट. सो ये जो इक्वेशन है ये 2 स्टेप का इक्वेशन है कि पहले सॉलिड से कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में, फिर उसमें हो रहा है आयोनाइजेशन में. तो मैं इसको एक ही रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकती हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो कैसे लिखोगे, हाउ विल यू राइट दिस, इन द फॉर्म ऑफ दिस, वी हैव टू राइट दिस इन दिस फॉर्म. AgCl solid is converted into a Ag plus and Cl minus n. ये वाली स्टेप मैंने स्किप कर दी. करेक्ट, ये वाली जो स्टेप है AgCl एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट की स्किप कर दी मैंने, डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख दिया ऐसा. सो AgCl solid which is undergo dissociation gives Ag plus and Cl minus ion. बट इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि ये स्टेप है नहीं, ये स्टेप भी है यहाँ पे, पर हम लोग इसको स्किप कर लें. ओके, सो यही लिखा होगा यहाँ पे. Thus, the solid AgCl is in contact with the saturated solution. AgCl is a strong electrolyte, and it dissociates completely into its ions Ag plus and Cl minus ion. किस ion में convert हो रहा है वो, Ag plus and Cl minus ion में. Okay, so hence this is the dynamic equilibrium in between. This is the dynamic equilibrium in between AgCl solid and ions of Ag plus and Cl minus ion. Okay, this is the equilibrium. AgCl solid is converted into Ag plus ion and Cl minus ion. Now, जैसे हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो राइट डाउन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो क्या बनेगा ये इक्वेशन, AgCl जो इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, ये कैसे बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. बराबर. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या रहता है, K is equal to concentration of product upon the concentration of reactant. Concentration of product is concentration of Ag plus and concentration of Cl minus upon reactant is AgCl solid. So concentration of AgCl. K is equal to, equation become
a concentration of Ag plus into the concentration of Cl minus upon concentration of AgCl. Now this AgCl is a solid in nature, बराबर. ये जो AgCl है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. एंड एज वी नो सॉलिड फॉर्म में अगर इक्विलिब्रियम लिखना है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो वेरी माइन्यूट रहता है, विच इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट. ये जो सॉलिड है AgCl एज अ सॉलिड है अपने सॉल्यूशन में, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा बिकॉज इट इज सॉलिड इन नेचर. एंड एज वी नो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहता है, तो विच इज कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट. सो कंसिडर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसॉल्व्ड सॉलिड AgCl इज कांस्टेंट. सो AgCl इज इक्वल टू क्या होगा? अनदर कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय अ K डैश. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? क्या बनेगा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन क्या होगा? ये AgCl की जो वैल्यू है दैट मीन्स K डैश, इसको पुट करो. सो द इक्वेशन बिकम K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस अपॉन K डैश. अब कांस्टेंट एक साइड में लेके जाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में, तो इधर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो K इंटू K डैश बिकम concentration of Ag plus into the concentration of Cl minus. So this is the product. किसका प्रोडक्ट है? K into K dash. So this produce another one new constant, and this K into K dash produce one new constant, and this constant is called as the solubility product constant, which is denoted by a Ksp. So this equation become Ksp is equal to K into K dash. This equation become K into K dash. Ksp is equal to K into K dash. Okay, this Ksp is equal to K into K dash. तो इक्वेशन क्या बनेगा? Ksp म्हणजे मतलब क्या? K into K dash. So this equation become Ksp is equal to concentration of Ag plus into the concentration of Cl minus, and this Ksp is equal to solubility product constant. This Ksp is nothing but a solubility product constant. So at equilibrium, the concentration of ions remain constant because rate of dissolution of AgCl to give Ag plus Cl minus is exactly equal to the rate at which ions combine to form solid AgCl. Okay, the rate of dissolution of AgCl to give Ag plus and Cl minus ion is exactly equal to the rate at which ions combine to form AgCl. So what will be the equation? Ksp is equal to Ag plus and Cl minus. In general, the salt solubility equilibrium is. In general, the salt solubility equilibrium is. कैसे लिखा जाता है solubility equilibrium को? Like that. Bx solid is equal to xb raised to y plus ya raised to x minus. और c. अब ये आप लोग बोलोगे ये क्या लिखा है? Now this is the skill of, this is the fashion of writing of salt. Bxay मतलब B का कोएफिशिएंट रहेगा x, A का कोएफिशिएंट रहेगा y. जैसे हम लोग लिखते हैं ना CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. अब कैल्शियम का आयंस कितने? 1, क्लोराइड के कितने? 2. मतलब x की वैल्यू क्या हुई? 1, y की वैल्यू क्या हुई? 2. लाइक दैट. ठीक है, तो Bxay, B का कोएफिशिएंट है x, A का कोएफिशिएंट है y. अब ये दो आयंस है सॉल्ट के, B और A, B प्लस एंड A माइनस. अब अपने को पता है कि जैसे ये CaCl2 है तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 है, और क्लोरीन का क्या है? -1 है. तो ये क्या रहता है? अपोजिट रहता है ना एक दूसरे का. जो उसका करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट रहेगा उसके हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर रहती है. तो कैल्शियम का +2 है क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अटैच है. तो ये +2 क्यों आया है? बिकॉज ऑफ इट्स की 2 क्लोरीन के 2 एटम्स है. क्लोरीन के 2 एटम्स है मतलब क्या? y की वैल्यू 2 है. तो ये क्या होगा? b रेज़ टू द पावर y प्लस जो इसका कोएफिशिएंट रहेगा वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी, जो ये कोएफिशिएंट रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, और x इज द कोएफिशिएंट. सो ये x b y रेज़ टू द पावर मतलब y प्लस b रेज़ टू द पावर y प्लस. और सिमिलरली a के लिए कैसे लिखोगे? y इंटू a
raised to the power x minus. ठीक है, so this is the general equilibrium notation of salt solubility equilibrium. So the solubility product is, अब इसी को हम लोग सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे. पहले केएसपी का फॉर्मूला क्या आया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस एंड सीएल माइनस. अब उसको लिखेंगे इस सॉल्ट के फॉर्म में. तो हाउ विल यू राइट दिस, केएसपी इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये दो आयंस, अब जो सामने वाली टर्म रहती है ये कोएफिशिएंट रहते, while writing in concentration वो raised to the power हो जाती है ना. So the equation become b y plus raised to the power x, a x minus raised to the power y. This is the solubility product of salt, sparingly soluble salt. Hence, on the basis of that, we can define in the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of, कैसे define करोगे, the product of equilibrium concentration of constituent ions, ये दो ions, constituent ions raised to the power equal to their respective coefficient, raised to the power equal to their respective coefficient in the balance equilibrium expression at a given temperature is called as solubility product. सिंपल, कैसे डिफाइन करोगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को, द प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस, ये दोनों कंस्टिट्यूएंट आयंस रेस्ट टू द पावर, ये जो पावर्स है ना ये एक्स और वाई, रेस्ट टू द पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, ये उनके कोएफिशिएंट है ना, इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट ए गिवन टेम्परेचर, लिखना मत भूलना, इज कॉल्ड एज solubility product. That is called as solubility product. Now see the examples. Examples देखो यहाँ पे solubility product के. So formula of solubility product is KSP is equal to B raised to the power by plus raised to the power x, ax minus raised to the power y. Now consider this example BaSO4. Okay, it undergo dissociation. किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Ba2 plus and sulfate 2 minus. Now here this B मतलब Ba and A मतलब SO4. Okay, अब बेरियम का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आप लोगों को, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पे 1, करेक्ट. तो ये x की वैल्यू क्या हो गई 1, और सल्फेट का भी 1:1 ही रेशियो है ना, 1:1 ही रेशियो है, मतलब सल्फेट भी क्या, वायु की वैल्यू भी 1. अब इसकी पावर क्या है 2 प्लस, मतलब y प्लस क्या हो गया 2, और इसकी पावर क्या है 2 माइनस, मतलब x क्या हो गया 2. सो KSP बिकम Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस. इस फॉर्म में आपको उसको लिखना है, बस ऐसे एग्जांपल आते हैं एग्जाम में. KSP is equal to Ba2 plus and SO4 2 minus. In another case, take one example, calcium fluoride. In case of calcium fluoride, it undergo dissociation, Ca2 plus twice F minus. अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है बट y की वैल्यू 2 है, तो ये 2 क्या हो जाता है रेस्ट टू द पावर, मतलब y क्या है रेस्ट टू द पावर. सो KSP is equal to concentration of Ca2 plus into the concentration of F minus raised to the power 2. Okay, calcium phosphate. In case of calcium phosphate, balance this reaction, Ca3 2 plus, अब कैल्शियम के 3 आयन से तो 3 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, और फॉस्फेट ग्रुप पे 3 नेगेटिव चार्ज, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3 नेगेटिव. सो फॉस्फेट ग्रुप 3 नेगेटिव, और कितने हैं फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2. अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो वो आ जाएगी पावर में. सो हाउ विल यू राइट दिस KSP इक्वेशन, KSP is equal to C8 concentration of Ca2 plus raised to the power 3, ये सामने वाला 3 raised to the power जाता है ना, and phosphate concentration of phosphate 3 minus raised to the power 2, मतलब ये जो y बाहर दिख रहे हैं पावर में, वो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, तो ये raised to the power 2 होगा. Understood? And in last example, silver chromate Ag2CrO4, whenever it undergo dissociation forms Ag plus and chromate 2 minus, यहाँ पे plus 2 चाहिए. Okay, plus 2. So it forms Ag2 plus and chromate 2 minus.
Here the coefficient of Ag2 plus is 2, तो raised to the power 2 हो जाएगा, और क्रोमेट का coefficient कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी पावर नहीं आएगी, 1 ही रहेगी, तो जो हम लोग शो नहीं करते. So how will you write the KSP equation? The solubility KSP equation is concentration of Ag2 plus raised to the power 2, concentration of CrO4 2 minus. Okay, so these are the some examples of solubility products. Okay, so this is called as the solubility product. क्या solubility product में क्या क्या देखा आप लोगों ने? Firstly, what is the meaning of solubility and what is the meaning of solubility equilibria? We had taken well sparingly soluble salt, in that it is dissolved in a water. Sparingly soluble है तो थोड़ा सा dissolve हो जाता है, which is considered as a electrolyte and converted into Ag plus and Cl minus ion. So dynamic equilibrium already लिखा है, AgCl is converted into Ag plus and Cl minus ion, and this expression we are written in the form of equilibrium equation. So K is equal to concentration of Ag plus Cl minus upon AgCl. AgCl is a solid, so that's why its concentration is very low, so which is considered as a constant. So K minus is the constant for AgCl. So K into K dash produce a new constant, and this new constant is called as the solubility product constant, which is denoted by a K plus. So K plus की वैल्यू क्या आती है? So not K plus, KSP की वैल्यू क्या आती है? Concentration of Ag plus and Cl minus. But the sparingly soluble salt का equilibria हम लोग लिखते हैं in the form of BxAy is gives XB raised to the power y plus YA raised to the power x minus. So in the form of this, we have to write ionic solubility. We have to write solubility product constant, that means Ksp is equal to By plus raised to the power x, concentration of A x minus raised to the power y. Okay, hence on the basis of that we have to determine the solubility product. कैसे determine करते हैं? The product of equilibrium concentration of constituent ions raised to the power equal to their respective coefficient in the balanced equilibrium at a given temperature. That is called as solubility products. So some examples हम लोगों ने अभी स्टडी किए, BaSO4, CF2, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, सिल्वर क्रोमेट. So how will you write their solubility products? कैसे लिखोगे? तो ये यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्टडी किया है. Okay, so this is all about the solubility. Now in next lecture we will study about the relation between solubility and solubility product and the condition of precipitation. Okay, so ये अब हम लोग next lecture में देखेंगे. So till then, stay safe and stay healthy. Thank you, students.